Hello students, today we'll see the new points, the meaning of x tends to a. See, this one the most important points for limit. We'll discuss in our first lecture that for any indeterminate functions, to find the value of that functions with the help of limit, we first of all the knowledge of x tends to a is required. Now we'll discuss the x tends to a. That means the value of a variable is by increasing or decreasing in its value, or by increasing or decreasing we make them nearer to a. It means for a particular value. Now so we'll discuss the points. If the value of a variable x is brought, if the value of, then x tends to, x shows the variable, x क्या मेंशन कर रहा है कि x एक वेरिएबल है, एंड बाय इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग उसकी वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज करके वी गेट द नियरर वैल्यू और क्लोजर वैल्यू टू ए. हम ए के बहुत ही नज़दीक लेके जा रहे हैं. तो इफ़ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x इज brought very close to a number, and here the a is any numbers, like 1 2 3 4 -4 -3 -2 1 etc. Again, if the value of variable x, that means x की जो values है, means putting the value one by one, the variable x is brought very close to a number a by increasing or decreasing, its value, then it can be said that x tends to a, यानी x is going nearer to a. It means कोई particular value, and it is denoted by x tends to a, or we can say as approaches to a, x is going nearer and nearer to particular value a. Now we'll see the examples and clear this concept. So x tends to a, that's meaning to make the clear, x tends to a, that means I told the x is going nearer to a but not exact a. It means x approaches to a but not exact a की वैल्यू मीन्स x वेरिएबल हम मीन्स इंक्रीजिंग कर रहे हैं और उसे डिक्रीज करके मीन्स नियरर टू 1 लेके आ रहे हैं, बट नॉट एग्जैक्ट पर्टिकुलर वैल्यू, बिकॉज for exact particular value means it's indeterminate है. So it is necessary here to note, it is necessary here to note
कि x की जो वैल्यू है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मीन्स x की वैल्यू है एग्जैक्ट a नहीं है बट उसकी नियरर a मीन्स हम लेके आ रहे हैं, तो इट इज नेसेसरी हियर टू नोट दैट x tends to a means value of x means value of x is approaches value of x approaches very close to a, very close to a but not exact a नहीं है, but it will not be equal to a, यानी वो एग्जैक्ट a नहीं है बट इट्स वेरी क्लोज और वेरी नियर टू a, बट इट्स वेरी नियर टू a। ये दैट मीन्स यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू है, a इज इक्वल टू कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू है, विल डिस्कस नाउ। अंडरस्टैंड, सपोज वी वांट टू फाइंड x टेंड्स टू a, sorry 1, x tends to 1, so that means x is very near to, or we brought by increasing or decreasing the value of, by increasing decreasing nearer or very close to 1। अब मीन्स डेफिनेशंस को समझ रहे हैं अच्छे से, सिर्फ इफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x इज ब्रॉट वेरी क्लोज टू अ नंबर 1, हियर x टेंड्स टू 1 है, इसलिए close to the 1 by increasing or decreasing its value, then it can be said that x tends to 1। now see, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, द नंबर लाइन, और एग्जैक्ट मिडल में मीन्स मैंने 1 को ले लिया है, बिकॉज बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वी ब्रॉट द वैल्यू वेरी क्लोज टू 1। किसके नियर लाएंगे? 1। तो नॉर्मल केस में, यानी कि बुक्स के एग्जाम्पल के लिए कुछ भी कर सकते हैं, नॉर्मली फॉर एग्जाम्पल के मैं तुम्हें यहाँ पे समझ लो कि 2 वैल्यू है और यहाँ पे मीन्स 0 है, तो 0 मीन्स इंक्रीज होते होते 0.1, 0.2, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड देन 1। तो दैट्स मीन्स एक वैल्यू मैंने इंक्रीज करते करते बाय इंक्रीजिंग वी ब्रॉट नियरर टू 1, एंड बाय डिक्रीजिंग लाइक 0.9 सॉरी 1.9, 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1 and 1। But to solve the sums or to get the very close value, we make the normal difference 0.1 on both sides। For example, that's a 1, and we consider here the 1 plus, that's a positive side, so any numbers is given, here we want to find the x tends to 1, so 1 is the middle number for us, and we want both the value on both sides, positive side we can say and it's a negative side। तो पॉजिटिव साइड्स whatever पॉजिटिव इज ग्रेटर देन, सो 1 ऐड कर लो, तो 1 प्लस 0.1 मैंने ऐड कर लिया, देन आंसर इज 1.1। एंड यहाँ पे मैंने मीन्स 1 माइनस करना है तुम्हें 0.1, देन आंसर इज 1 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 0.9। नाउ और मीन्स 0.01 करते करते हम करते जाएंगे, तो यहाँ पे टू मेक और नियरर दैट्स 0.01, टू मेक क्लोज एंड वेरी क्लोज टू 0.01, and next very close is 0.001, or another close we want the value, sorry that's a 1.001, 1.01, 1.01, 1. So that's approximate we can say is it's a 1.001, then next 1.000000001, that is also nearer to 1, 0.9, then 0.99, then 0.999,
then 0.1 2 3 4, then 99998. That's we can say it's a approximately 1 but not exact 1. So what happened, we brought very close to a, it means a value is given, for that we have to find the value of a functions but not exact that value is there. Clear itna? Now for negative numbers, see the same concept we clear it. For negative number, for example, you want to find the -2 or a -1. Okay, -2. Then what happened, at the right hand side और लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट दिया है कि मीन्स वॉट एवर द नंबर्स -2, देन यू हैव टू ऐड 0.1 and whatever the number is there, then -2 minus 0.1. left side shows the negative numbers normally or less numbers, or right hand side shows the positive numbers or greater numbers. So -2 plus 0.1, it's a -1.9, then -1.99, it's also very close to -2, -1.999, -1.11999. Now we can say it's very close to -2. And here -2 minus 0.1, -2.1, then -2.01, -2.001, -2.001. now it's very close to -2. तो नेगेटिव नंबर्स हो तो माइंड में रखना है कि मीन्स यहाँ पे चेक कर सकते हो तुम कि यहाँ पे 99 वाली सीरीज आ रही है, यहाँ पे 00 सीरीज है, नेगेटिव में वो चेंज हो रहा है. सो कई बार ये मिस्टेक्स हो जाती है स्टूडेंट से नेगेटिव नंबर्स में, वो ऐसे कंसिडर कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें दे दूँ -2.1, -2.01, -2.001, -2.001, एंड यहाँ पे चेंज हो जाएगी, बट वो मिस्टेक है. दैट्स नॉट अ -2.1 and 2 which is greater than -2 is greater than -2.1. सो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन में. तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो चुका है. नाउ अगेन अब मीन्स डेफिनेशन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे तो अब क्लियर हो जाएगा. सी द मीनिंग ऑफ x टेंस टू a, इट मीन्स x टेंस टू 1, x टेंस टू 2, x टेंस टू 3 और x टेंस टू -1, x टेंस टू -3, वॉट एवर. तो इफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x इज ब्रॉट वेरी क्लोज टू a means any numbers very close to a number a by increasing or decreasing. here we can say यहाँ पे मीन्स हम क्या कर रहे हैं, decreasing and brought nearer or close to 1. यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो by increasing and brought close to or nearer to 1. the same way here we can say by decreasing we brought the value nearer or close to -2, or by increasing we brought the value nearer or close to -2. तो ये मीन्स जो ट्रेंड है मीन्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इट्स सो स्टैंड्स, इट्स अप्रोचेज है कि इट्स वी ब्रॉट वेरी क्लोज टू दी पर्टिकुलर वैल्यू, वी गेट दी वैल्यू ऑफ फंक्शंस फॉर ऑल दिस वैल्यू 1.9, 1.99, 1.999, 1, बट फॉर -2 इट्स इंडिटर्मिनेंट्स, -1 इंडिटर्मिनेंट्स विल डिस्कस क्या हो. नाउ सी अगेन the value of variable x is brought very close to a number a by increasing or decreasing its value, then it can be said that x tends to a. x tends to क्या हो रहा है, a, and it is denoted by x tends to a. x tends to a. So it is necessary here to note that x tends to a means the value of x is approaches
approach is very close to a but it will not be equal to a, exact a नहीं है but its approach is a, that means is very close to a, देखिए बहुत नियरर है बट एग्जैक्ट मीन्स वो वैल्यू नहीं है क्योंकि वहाँ पे वो इंडिटर्मिनेंट्स है. ओके, नाउ लेट्स limit of a function. Now we'll discuss the limit of a function. Limit of a function: when the value of variable x is brought closer and closer to number a, the value of function x fx reaches closer and closer to a definite number l, then we can say that as x tends to a, fx tends to l, and in other words, as x tends to a, fx tends to l. Symbolically, it can be written limit x tends to a. Okay, now we'll discuss when the value of variable x, when the value of variable x is brought closer and closer to a number a, the value of function fx reaches closer and closer to a definite number l, the fx reaches closer and closer to a definite number l, and then x is closer and closer to a number a, then we can say that as x tends to a, fx tends to l, यानी कि x की वैल्यू में हम चेंजेस करके वेरिएबल में मीन्स वी ब्रॉट इज वेरी नियरर टू a, जैसे मीन्स हम a के नियर लेके आ रहे हैं. यहाँ पे मैंने तुम्हें फर्स्ट लाइन जो मीन्स नंबर लाइन है उसमें मेंशन किया है. सो ये सभी वैल्यू को सपोज तुम फंक्शन में पुट कर रहे हो, तो fx फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड देन fx द वैल्यू फ्रॉम राइट साइड. वी डिस्कस दैट it's exactly it is called a limit of right hand side और the limit of left hand side. तो ये लेफ्ट हैंड साइड की ऑल वैल्यूज़ जितनी भी है और ये राइट साइड की जितनी भी वैल्यू है, राइट और लेफ्ट दोनों को मीन्स हम कैन करेंगे. तो इट्स तो द एफ एक्स इज नियरर टू पर्टिकुलर एक डेफिनेट वैल्यू के नज़दीक आ रही है, इट्स वेरी नियरर टू और डेफिनेट वैल्यू, देन यू कैन से दैट्स x टेंड्स टू a एंड fx टेंड्स टू l. fx की यानी कि हमारी जो फंक्शन की वैल्यू है वो कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू हो रही है और x इट्स ब्रॉट क्लोजर एंड क्लोजर टू a, देन fx इज ऑल्सो गोइंग क्लोजर एंड क्लोजर टू पर्टिकुलर और अ डेफिनेट वैल्यू l. So in other words we can say in short, then as x tends to a and fx tends to l, symbolically we can write it as limit x tends to a, but not exact x is equal to a, x tends to a and then fx is equal to l. The value fx is also tends to particular value of l. So limit x tends to a, x जैसे जैसे a को मीन्स नियरर हो रहा है
देन एफ एक्स की वैल्यू है मीन्स किसके नियरर हो रही है, एल के नियरर हो रही है. सो वी कैन गेट अ वैल्यू फॉर द फंक्शन is called the limiting value of functions, is called a limiting value of function. Now we'll discuss the one problems so we can make all very clear. Okay, for example fx is equal to, here the one function is given x square minus 1 divided by x minus 1, and find the value for x is equal to 1. At x is equal to 2, x is equal to 1. Now we put the 1 in a function, so f1 is equal to 1 square minus 1 divided by 1 minus 1. 1 square is equal to 1 minus 1 divided by 1 minus 1, then 0 divided by 0. And the 0 divided by 0, that is called indeterminants. It's called a indeterminants. So in this case, here we cannot get the value by substituting a in a function. सपोज कि किसी भी वैल्यू को आप फंक्शन में सब्सटीट्यूट कर रहे हो तो तुम्हें सपोज डायरेक्टली आंसर मिल रहा है तो इट्स ओके, यू गेट द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन. बट इफ यू सब्सटीट्यूट अ पर्टिकुलर वैल्यू, फॉर दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट. वी गेट 0 divided by 0, that's indeterminate value. So we can say that with the help of limit we can find. And here there are two methods. One is a tabular method and the second one is a limit method. So first we will discuss the tabular method. Tabular method को means हम discuss कर रहे हैं. See what happens here, for 1 or for at is equal to 1 we cannot get the value of a function. यानी हमारे पास whatever the function is given, जो function दिया है उसकी वैल्यू हमें नहीं मिल रही है, इसकी वैल्यू हमें नहीं मिल रही है. सो सी नाउ व्हाट हैपन्स, वी मेक अ लाइन अगेन मीन सेम वैल्यू ले रहे, वी मेक द अप्रोचेज ऑफ ए, नॉट एग्जैक्ट ए के लिए फंक्शन पॉसिबल नहीं है. व्हाट हैपन हियर, क्या हो रहा है, वी कैन नॉट द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 1, बट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट 1.1. we get the value of 1.01, we can get the value of 0.001, and we can get the value of 0.0001. or also that is the left hand side, sorry right hand side. And now the value of our left hand side is, we can get the value at 0.9, then 0.99, 0.999, 0.49. So see at the left hand side or at the left side, x towards 1 from left hand side, or x we can say is the x approaches from the left hand side. मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वैल्यू वेरिएबल है x मीन्स इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू जो 1 मीन्स वो हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से its approaches to, or its close means closer and closer to 1, and from right hand side we also makes the value of a variable, it's very closer to 1. Now we can find from left hand side or from right hand sides. So see the value of a variable, the variable x tends to, and the value of a function fx is. तो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x इज and the value of function fx. Now for example we want the value from left hand side is 0.9, to put the 0.9 in a function, put the 0.9 in a function f0. See the fx is equal to
x square minus 1 divided by x minus 1. Now put f 0.9. So 0.9 whole square minus 1 divided by 0.9 minus 1, 0.9 square, 0.81 minus 1 divided by 0.9 minus 1 तो इज इक्वल टू 0.81 माइनस 1. तो आंसर क्या हो रहा है 0.19 डिवाइड बाय 0.9 माइनस 1 माइनस 0.1. सो माइनस माइनस कैंसिल होगा. 0.19 डिवाइड बाय 0.1, देन आंसर इज 1.9. आंसर इज 1.9. सो फॉर 0.9 the value of function is determinants. for 0.9 के लिए मीन्स हम फाइंड कर सकते हैं, बट 1 के लिए वो पॉसिबल नहीं था. सो 0.9 के लिए आंसर क्या आ रहा है 1.9. इन द सेम वे, मैं आगे ये सिंप्लीफिकेशन नहीं कर रहा हूँ बट तुम समझ जाओ. इन द सेम वे टू फाइंड द 0.99, देन आंसर इज 1.99. for 0.999 the answer is 1.999. for 0.9 then answer is 1.9999. so we can say the fx is approaches to approximately 2. it's very nearer to 1.9999, that means 2. so we can say that x tends to 1, then fx tends to 2. now at the right hand side, this is the result of left hand side. now we'll check the right hand side. right hand side we have the value 1.1. see the value is 1.1. x is equal to 1.1. now we'll solve the 1.1. fx is equal to x square minus 1 divided by x minus 1. so f 1.1 is equal to 1.1 square minus 1 divided by 1.1 minus 1. so 1.1 square is equal to 1.21 minus 1 divided by 0.1. so that's answer is 0.21 divided by 0.1 is equal to 2.1. so at x is equal to 1.1, the value of x is 2.1. for 1.01 the answer is 2.01. you can check. then 1.001 the answer is 2.001. then 1.0001, then 2.1231. so we can say this is 2.1, 2.01, 2.0012. so when also here what happen, then x tends to 1. x जैसे जैसे nearer to 1 हो रहा है, then fx is also goes nearer to 2. so fx tends to 2. so we can write that limit x tends to a 1, x tends to 1, limit x tends to 1, fx it means x square minus 1 divided by x minus 1. it is the function x square minus 1 divided by x minus 1 is equal to 2. so this is the limiting value of, and we can find with the help of factorization also, but we'll discuss later how we can find the value. some common factor is there when the value of a function is indeterminate. so let's see the one more example of tabulars. we can find the value but with the help of tabulars. वन मोर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे. फाइंड मीन्स समटाइम्स द वैल्यू ऑफ द फंक्शन डज नॉट एक्सीड भी हो सकता है, यानी कि वैल्यू इज नॉट पॉसिबल. नाउ विल डिस्कस दैट पॉइंट. फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1
1 divided by x minus 1, x belongs to R minus 1 by tabular method. We know very well the tabular method. That means here we have to find the x tends to 1. Again means पहले तो ये पता होना चाहिए कि x tends to 1, that means the value R approaches to 1 or nearer to 1. Again means 1.1, 1.01, 1.001, 1.0001, and here the 1.9, sorry, 0.9, 0.99, 0.999, and 0.49. It's very nearer to 1. Now again same way we have both the values. Now see what happened. It's a fx, the x and the function fx or fx. अगेन ये राइट हैंड साइड मीन्स यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं हम, और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मीन्स यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं. सो द वैल्यू एट अ लेफ्ट हैंड साइड इज 0.9, 0.99, 0.999, 0.9999, and here the 1.1, 1.01, 1.001, 1.001, the same way. Now see in the function, first we'll solve the function fx is equal to, so first we solve the function from left hand side or right hand side, whatever. Fx is equal to the function fx is equal to 1 upon x minus 1. So first we put the x, 1.1 is equal to 1 divided by 1.1 minus 1 is equal to 1 divided by 0.1. So then answer is 10. Now for f 1.01, so 1 divided by 1.01 minus 1 is equal to 1 divided by 0.01, then answer is 100. So same way we can say is for 1.1 the answer is 10, for 01 it's 100, for 1.01 you can solve, that is 1000 and it's a 10,000. And the same way for 0.9, we'll see fx is equal to 1 divided by x square minus 1. So f 0.9 is equal to 1 divided by 0.9 square minus 1. So 1 divided by 0.81 minus 1. So 1 divided by minus 0. Sorry, x minus 1, not x square minus 1 but x minus 1. So it's okay, minus 0.1. So answer is minus 10. For fx is equal to 0.99, 1 divided by 0.99 minus 1 is equal to 1 divided by minus 0.01, then answer is minus 100. The same way minus 10, minus 100, minus 1000, minus 10,000. What happened? तो here the value of fx, x then x ओके है, तो x तो हमारा क्या कर रहा है, x टेंस टू 1 हो रहा है, यहाँ भी x टेंस टू 1, दैट्स ओके, दोनों सेम है. बट fx इज टेंस टू माइनस नेगेटिविटी में जा रहा है, और यहाँ पे fx इज इक्वल टू क्या हो रहा है, पॉजिटिविटी है, इट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है. सो ये दोनों मीन्स हम सपोज के किसी लाइन पर ड्रॉ करेंगे तो जैसे जैसे x नियरर टू आ रहा है तो पता चलेगा कि fx क्या हो रहा है, वेरी फार फ्रॉम मीन्स पर्टिकुलर वैल्यू से, मीन्स दोनों क्या हो रहे हैं एक दूसरे से, इज गोइंग वेरी फार. सो वी कैन से इज द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन और द वैल्यू ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिट. ये इंपॉर्टेंट है, डज नॉट एग्जिट, तो ये तुम्हें फाइंड करना है. ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि मीन्स यहाँ पे. सो वी कैन से दैट फॉर
the limiting value, the limit x tends to a, limit x tends to a divided by 1 upon x minus 1 does not exist, डज नॉट एग्जिट, यानी कि ये फंक्शन क्या, ये वैल्यू के लिए ये फंक्शन एग्जिट नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों की एक पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ से एक और चीज़ मैं तुम्हें सिंपली मेंशन कर दूँ, ये भी जब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो पता चलेगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल के मैं ये इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 सो इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 0। तो समझ लो इफ ओनली द डिनोमिनेटर्स बिकम 0 इन फंक्शंस by substituting any value, so we can easily say it does not exist, does not exist। यहाँ पे easily आप ये mention कर सकते हो। so two rules keep in mind, 0 divided by 0 it's called a indeterminants, indeterminants, ये indeterminate है, but by making the common factor and by cancelling the common factor we can find the value of the function। but when a particular value means any numbers 1 2 3 or denominators is become 0, it's called does not exist, does not exist। यहाँ पे वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, वो फंक्शन एग्जिट नहीं है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रूल्स हैं हमारे लिए। when we substitute the value and the answer is 0 divided by 0 that's called a indeterminate। पर्टिकुलर वैल्यू मिल रही है 1 2 3 4 5 या a b c, that's we get the value of the functions directly। and suppose 0 डिवाइड बाई 0 है तो वो बन गया तुम्हारे लिए indeterminates, तो उसमें से कॉमन फैक्टर निकाल के फिर करना है, वो टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में चेक करने वाले हैं। और ये 1 डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल इट डज नॉट एग्जिट। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, वो माइंड में रखेंगे। और नेक्स्ट जो मेथड है हमारी वो मीन्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।